हेलो गाइज। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। तो टोटल में 200 टॉप 200 क्वेश्चन को बात करेगा, लेकिन आज मैं सिर्फ 50 MCQs को बात करेंगे। एंड यहाँ देख सकते हो सेवन पोस्ट का वैकेंसी निकला है। नर्सिंग, डायलिसिस, हेल्थ एंड मलेरिया, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, ECG टेक्नीशियन एंड लेबोरेटरी का टोटल 7 पोस्ट का वैकेंसी निकला है। एंड नेक्स्ट यहाँ देख सकते हो प्रोफेशनल एबिलिटी जो है, यहाँ से टोटल 70 क्वेश्चन पूछने वाला है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ही पड़ेगा आप लोगों को। एंड यहाँ देख सकते हो प्रोफेशनल एबिलिटी जो है पूछने वाला है सब पोस्ट का, मतलब पर पोस्ट का स्पेसिफिक सिलेबस भी दिया हुआ है। एंड ये जो 7 पोस्ट है, 7 पोस्ट का ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है सबका कॉमन है, सेम है। एंड फार्माकोलॉजी भी है, तो वो तो बाद में बात करेंगे। तो आज देखेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का प्रोफेशनल एबिलिटी से 70 क्वेश्चन पूछने वाला है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से आज। माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड, ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन देख के आप लोगों को मालूम हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रोड्यूस ATP थ्रू रेस्पिरेशन, so they are the powerhouse of the cell. Next is process of swelling is called option दिया हुआ है digestion, mastication, deglutition and peristalsis. The process of swelling is called, option C is correct, deglutition. Swelling of food from mouth to esophagus. Mouth to esophagus is called deglutition. Next is the part of the brain that maintains posture and balance is called cerebrum, cerebellum, medulla, hypothalamus. तो ऑप्शन यहाँ देख सकते हो, the part of the brain that maintains posture and balance is called cerebellum. ऑप्शन B is correct, cerebellum. सेरिबेलम जो है ये कंट्रोल करता है बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड पोस्चर ऑफ एंड बैलेंस। सेरिबेलम जो है कंट्रोल्स बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट इज द लेरिंग्स इज कॉमनली नोन एज, तो लेरिंग्स जो है ये बॉयज बॉक्स से जाना जाता है। लेरिंग्स जो है प्रोड्यूस करता है साउंड, सो इट इज कॉल्ड बॉयज बॉक्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, फेगोसाइटोसिस इज ए फंक्शन ऑफ, ऑप्शन दिया हुआ है RBC, प्लेटलेट्स, WBC, प्लाज्मा। तो फेगोसाइटोसिस इज ए फंक्शन ऑफ, ऑप्शन सी इज करेक्ट, WBC। WBC जो है एनगल्फ एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स थ्रू फेगोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स इज कॉल्ड, तो इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स इज कॉल्ड आर्थराइटिस। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, आर्थराइटिस। आर्थो, ARTHRO, आर्थो मीन्स होता है जॉइंट, आर्थो मीन्स जॉइंट एंड आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स इज कॉल्ड आर्थराइटिस। नेक्स्ट इज द हार्मोन रेगुलेटिंग बेसल मेटाबॉलिक रेट, द हार्मोन रेगुलेटिंग बेसल मेटाबॉलिक रेट इज इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, थायरोक्सिन। Hormone regulating basal metabolic rate is thyroxine. Thyroxine जो है from thyroid gland controls metabolism and growth. Next is decrease in number of RBC in the blood is called, decrease in number of RBCs in the blood is called leukopenia, anemia, leukemia, polycythemia. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, एनीमिया। डिक्रीज इन नंबर ऑफ RBCs in the blood is called anemia. तो लो RBC काउंट और हेमोग्लोबिन causes anemia. नेक्स्ट इज absence of HCl in gastric juice is called, absence of hydrochloric acid in gastric juice is called hyperacidity, achlorohydria, gastritis, ulcer. तो absence of HCl in gastric juice is called, option B is correct, achlorohydria. A मीन्स होता है एब्सेंस एंड क्लोरोहाइड्रा मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
नेक्स्ट इज menopause in females. menopause in females usually occurs between, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में अगर देखें तो ऑप्शन सी इज करेक्ट 45 to 55 years. menopause in females usually occurs between 45 to 55 years. next is astigmatism is corrected by using, ऑप्शन दिया हुआ है concave lens, convex lens, cylindrical lens and bifocal lens. astigmatism is corrected by using, option C is correct, cylindrical lens. next is normal viscosity of blood is, तो normal viscosity of blood is 4.5 to 5.5 times thicker than water. normal viscosity of blood is, तो ऑप्शन देखें तो ऑप्शन C is correct, 4.5 to 5.5 times thicker than water. melatonin is secreted by, melatonin is secreted by, ऑप्शन दिया हुआ है थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड. तो मेलाटोनिन इज सिक्रीटेड बाय, ऑप्शन सी इज करेक्ट, पिनियल ग्लैंड. पिनियल ग्लैंड जो है ये सिक्रीट करता है मेलाटोनिन को एंड ये व्हिच रेगुलेट्स स्लीप वेक साइकिल, स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है एंड सिक्रेटेड बाय पिनियल ग्लैंड. नेक्स्ट इज formation of a clot. formation of a clot inside a blood vessel is called hemophilia, thrombosis, embolism, leukocytosis. formation of a clot inside a blood vessel is called, option B is correct, thrombosis. thrombosis जो है is clot formation inside a blood vessel. next is normal blood pressure is, normal blood pressure is, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है सबको पता होगा 120/80 मिलीमीटर ऑफ Hg. 120 जो है ये सिस्टोलिक है एंड 80 जो है डायस्टोलिक. नेक्स्ट इज टोटल लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट, टोटल लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन अबाउट, ऑप्शन दिया हुआ है 2, 3, 5, 10. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 5 meters. small intestine in adults measure about 5 meters in length. next is which part of the ear resembles a snail shell, which part of the ear resembles a snail shell. तो ऑप्शन दिया हुआ है कोइक्लिया, पिना, टिम्फेनम एंड मेलियस. which part of the ear resembles a snail shell बोला है तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, कोइक्लिया. कोइक्लिया जो है ये स्पाइरल शेप है लाइक ए स्नेल एंड ये हेल्प करता है हियरिंग के लिए, इट हेल्प्स इन हियरिंग. ऑप्शन ए इज करेक्ट, कोइक्लिया. नेक्स्ट इज tongue is attached to which bone, femur, hyoid bone, mandible and temporal bone. tongue is attached to which bone, hyoid bone. option B is correct, hyoid bone. hyoid bone जो है ये सपोर्ट करता है टंग को एंड इट इज कॉल्ड द टंग बोन. टंग बोन भी बोल सकते हो hyoid bone को. नेक्स्ट इज गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, ऑप्शन दिया हुआ है एक्सॉन, डेंड्राइट, सिनाप्स, न्यूरोलेमा. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सिनाप्स. सिनाप्स जो है ये एक जंक्शन है where nerve impulse passes from one neuron to another. next is absence of urine is known as oliguria, anuria, dysuria and polyuria. तो absence of urine is called, option B is correct, anuria. anuria का मतलब होता है complete absence of urine formation. next is deposition of fat inside artery walls is called, thrombosis, atherosclerosis, viscous veins embolism. तो deposition of fat inside artery walls is called, option B is correct, atherosclerosis. atherosclerosis जो है is a thickening and hardening of arteries due to fat deposits. next is
Total number of vertebrae in humans. Total number of vertebrae in humans is 26, 30, 33, 36. तो option C is correct, 33. Total number of vertebrae in humans is 33. तो 33 कैसे है? ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम हैज़ 33 वर्टिब्री. उसमें से है 7 सर्विकल है एंड 12 है थोरेसिक का एंड 5 है लुम्बर का एंड 5 है सेक्रल एंड 4 है कोकिजियल का. तो टोटल 33 है. 33 में से 7 आएगा सर्विकल के लिए, 12 आएगा थोरेसिक, 5 है लुम्बार एंड 5 है सेक्रल एंड 4 है कोकिजियल. नेक्स्ट इज deficiency of iodine causes. Deficiency of iodine causes anemia, rickets, goiter, scurvy. Option C is correct, goiter. Lack of iodine leads to enlargement of thyroid gland called goiter. Next is enzymes trypsin and chymotrypsin are present in saliva, gastric juice, pancreatic juice, intestinal juice. Enzymes trypsin and chymotrypsin are present in, option C is correct, pancreatic juice. तो पेनक्रियास जो है ये सीक्रेट करता है ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन फ्रॉम प्रोटीन डाइजेशन. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज व्हिच पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड विंडो ऑफ द आई. आई का कौन सा पार्ट को विंडो ऑफ द आई बोला जाता है? आइरिस, रेटिना, कॉर्निया, लेंस. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, कॉर्निया. कॉर्निया जो है, कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट एंड अलाउस लाइट टू एंटर एंड इज कॉल्ड विंडो ऑफ द आई. नेक्स्ट इज व्हिच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर. तो ये तो मालूम होगा आप लोगों को, ग्रुप ब्लड ग्रुप ओ, स्पेशली ओ नेगेटिव. ये डोनेट कर सकता है ऑल ग्रुप्स को, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर. नेक्स्ट इज micturition or urination is a function of kidney, liver, urinary bladder, ureter. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, urinary bladder. urination is a function of urinary bladder. तो urinary bladder जो है ये स्टोर करता है यूरिन एंड एक्सपेल करता है, expels it by micturition. नेक्स्ट इज normal value of RBC in blood is about. normal value of RBCs in blood is about. ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन में अगर देखें तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 5 million पर क्यूबिक मिलीमीटर. नॉर्मल वैल्यू ऑफ आरबीसी इन ब्लड इज अबाउट 5 million पर क्यूबिक मिलीमीटर. नेक्स्ट इज द कार्डियक साइकिल टाइम इज 0.5 सेकेंड, 0.6 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, 1 सेकेंड. ऑप्शन सी इज करेक्ट, 0.8 सेकेंड. One heartbeat lasts about 0.8 second. One heartbeat या cardiac cycle lasts about 0.8 second. Next is saliva secretion occurs in. Saliva secretion occurs in stomach, mouth cavity, small intestine, pancreas. Option B is correct, mouth cavity. Saliva gland जो है in mouth secretes saliva, digestion of starch. Saliva secretion occurs in mouth cavity. या बोल सकते हो सलाइवरी ग्लैंड इन माउथ सिक्रीट सलाइवा फॉर डाइजेशन ऑफ स्टार्च. नेक्स्ट इज तो क्वेश्चन 31, पेटिला इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ बोन. पेटिला इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ बोन. तो पेटिला जो है एक नीकेप है एंड इज द लार्जेस्ट सिसोमोइड बोन. ऑप्शन सी इज करेक्ट. पेटिला जो है नॉट ए लॉन्ग बोन, फ्लैट बोन और इरेगुलर बोन, इट इज ए सिसोमोइड बोन, नीकैप. नेक्स्ट इज एसए नोड और साइनोट्रियल नोड इज कॉल्ड. ऑप्शन दिया हुआ है हार्ट रेगुलेटर, पीस मेकर, बाल्ब ऑफ हार्ट, कंडक्टर. साइनोट्रियल नोड इज कॉल्ड, ऑप्शन बी इज करेक्ट, पीस मेकर. साइनोट्रियल नोड जो है ये जनरेट करता है इम्पल्सेस टू रेगुलेट हार्ट बीट, सो इट इज कॉल्ड पीस मेकर. Next is normal value of WBC in blood. Normal value of WBCs in blood is, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में अगर देखें तो 2000, 4000, 46. ऑप्शन सी इज करेक्ट, 6000 to 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर.
Next is sternum. Sternum is a bone of the skull, thoracic cavity, vertebral column, pelvic cavity. So sternum is a bone of the, option B is correct, thoracic cavity. Sternum is a bone of the thoracic cavity. तो sternum जो है ये एक ब्रेस्ट बोन लाइज इन द चेस्ट. स्टर्नम जो है ये एक ब्रेस्ट बोन है एंड लाई करता है चेस्ट बोन एंड प्रोटेक्ट्स हार्ट एंड लंग्स. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड thoracic cavity. नेक्स्ट इज ADH. ADH का मतलब होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन. बेजोप्रेसिन इज सिक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी, एड्रिनल, पेनक्रियास. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड. Antidiuretic hormone from posterior pituitary regulates water balance. Option B is correct. Next is the end. The end of the childbearing period in women is called. The end of the childbearing period in women is called. ऑप्शन दिया हुआ है पोवर्टी, ओवुलेशन, मेनोपॉज, फर्टिलाइजेशन. तो ये क्वेश्चन पहले भी मिला है. कौन सा एज में होता है? तो 50 to 55 बोल सकते हो, और किसी का भी कम भी हो सकता है और किसी का भी ज़्यादा भी हो सकता है. तो द एंड ऑफ द चाइल्ड बियरिंग पीरियड ऑफ वुमेन इज कॉल्ड. ऑप्शन सी इज करेक्ट, मेनोपोज. मेनोपोज बोला जाता है. मेनोपोज जो है यह परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, या बोल सकते हो एंडिंग फर्टिलिटी. ऑप्शन सी इज करेक्ट, मेनोपोज. नेक्स्ट इज पुबर्टी. पुबर्टी इज द एज ऑफ इन्फेंसी, मेच्योरिटी, ओल्ड एज, चाइल्डहुड. ऑप्शन बी इज करेक्ट, मेच्योरिटी. पुबर्टी का मतलब होता है इज व्हेन सेक्सुअल मेच्योरिटी बिगिंस, या बोल सकते हो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेच्योर होता है जब. तो पुबर्टी इज द एज ऑफ मेच्योरिटी. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज ग्लोमेरुलस, नेफ्रॉन, यूरेटर, बाउमेन्स कैप्सूल. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज, ऑप्शन बी इज करेक्ट, नेफ्रॉन. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज नेफ्रॉन. नेफ्रॉन जो है फिल्टर करता है ब्लड एंड रीअब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स एंड फॉर्म यूरिन. नेक्स्ट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसीज इज कॉल्ड. इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसीज इज कॉल्ड एनीमिया, ल्यूकोसाइटोसिस, पॉलीसाइथेमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसीज इज कॉल्ड, ऑप्शन सी इज करेक्ट, पॉलीसाइथेमिया. पॉलीसाइथेमिया का मीन्स होता है एबनॉर्मली हाई नंबर ऑफ आरबीसी. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज कवरिंग ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड. कवरिंग्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड प्लूरिया, पेरिकार्डियम, मेनिंजिस एंड पेरिटोनियम. तो कवरिंग ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड, ऑप्शन सी इज करेक्ट, मेनिंजिस. तो ब्रेन जो है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर प्रोटेक्टेड बाय मेनिंजिस. तो 3 मेनिंजिस आर ड्यूरा, एराकोइड, एराक्नोइड एंड थर्ड इज पिया मेटर. नेक्स्ट इज नॉर्मल वैल्यू ऑफ वाइटल कैपेसिटी इन ह्यूमंस इज अबाउट. Normal value of vital capacity in humans is about 3 liter, 4 liter, 5 liter, 6 liter. So normal value of vital capacity in humans is about, option C is correct, 5 liters. Next is appendix is an organ of the respiratory system, digestive system, circulatory, excretory. So appendix is an organ of the digestive system. Option B is correct, digestive system. Appendix जो है ये एक small part है of the large intestine in the digestive system. Next is sacrum consists of how many fused vertebrae? 3, 5, 7, 9. Sacrum consists of how many fused vertebrae? तो sacrum जो है, sacrum is formed by fusion of 5 sacral vertebrae. ऑप्शन बी इज करेक्ट. sacrum is formed by fusion of 5 sacral vertebrae. Next is
sebaceous gland are present in the liver, skin, kidney, lungs. Option B is correct, skin. Sebaceous gland secrete sebum या oil बोल सकते हो to lubricate the skin and hair. Next is which structure is a common part of both the respiratory and digestive system? Which structure is a common part of both the respiratory and digestive system? Option दिया हुआ है trachea, esophagus, pharynx, larynx. तो option C is correct, pharynx. Which structure is a common part of both the respiratory and digestive system? Option C is correct, pharynx. Pharynx जो है ये allow करता है passage of both air and food. Next is lysosome are also called. Lysosome को are also called powerhouse of the cell. तो ये तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है kitchen of the cell, suicidal bag of the cell, brain of the cell. Option C is correct. Lysosome are also called suicidal bag of the cell. तो लाइसोसोम जो है ये कंटेन करता है डाइजेस्टिव एंजाइम दैट कैन डिस्ट्रॉय worn out cell parts. Next is normal viscosity of blood is. ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन में अगर देखें तो ऑप्शन नॉर्मल विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इज 4.5 to 5.5. Normal viscosity of blood is 4.5 to 5.5 times thicker than water. Next is which blood group is known as the universal recipient? तो यूनिवर्सल डोनर था 0 especially O negative, and universal recipient is blood group AB. Blood group AB can receive blood from all groups, so it is called universal recipient. Next is meatus is a small bone, a tube-shaped cavity in a bone, a type of cartilage, a blood vessel. So meatus is a passage like an opening in a bone. Option B is correct, a tube-shaped cavity in a bone. Next is facet refers to option दिया हुआ है a large flat bone surface, a cavity inside a bone, a small flat articulating surface, a type of joint. So facet refers to option C is correct, a small flat articulating surface. Facet refers to a small flat articulating surface. तो ये था टोटल 50 MCQs ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का. नेक्स्ट और टोटल 200 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हो टॉप, एंड आज 50 क्या है, नेक्स्ट और 150 MCQs को और कुछ वीडियो में बात करेंगे, एंड बाद में फार्माकोलॉजी को लेकर बात करेंगे एंड बायोकेमिस्ट्री को लेकर. एंड थैंक्स फॉर वाचिंग. नेक्स्ट और एक वीडियो में